Think about the relative priority. Which ones you think are high impact, which ones you think are less impactful, and then how difficult is it for those actions to be completed? Translation that and I'll demonstrate using the book. अभी जैसे हमने पहले बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस की, उसके बाद डिस्कस की कि प्रॉब्लम की समस्या क्या है, स्टूडेंट एनरोलमेंट के लिए अगर स्टूडेंट एनरोलमेंट देखें और उसकी सारी सॉल्यूशंस देखें, तो ये इस एक्सरसाइज में आप सॉल्यूशंस के बारे में ये सोचें कि हर एक सॉल्यूशन कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से इम्प्लीमेंट हो सकती है, कि एक या ऐसी चीज़ है जो आप कल जाके कर लें या जिसमें बहुत मुश्किल है और मसाइल हैं इम्प्लीमेंटेशन में, और दूसरी चीज़ आप ये देखें कि हर सॉल्यूशन का कितना इफेक्ट होगा। हाई इम्पैक्ट का मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा असर होगा। लो इम्पैक्ट का मतलब कि इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आप हर सॉल्यूशन के बारे में ये दोनों चीज़ें डिस्कस करें। So, the first thing we would like you to do, there are some red cards on your tables, is thinking about the actions that you identified this morning, or thinking about some of the challenges that we just explained to you, and what you might do is to write down a set of actions on the red cards, just as you've been doing over the last 2 days, one action on one card, an action that will help you achieve your targets on student enrollment. When you've got those, we would then like you to consider where you might put them on the brown paper. And the decision that you have to take is whether you think on the brown paper, at the top here, if it's a high impact activity, or low impact, then you put lower down there. Now, if you want to put it over the right-hand side, that means it's going to be an action, a solution that will be hard to get done. On the left-hand side here, it's something that will be easy. So we want you to take these red cards and stick them into one of the 4 quadrants on the brown paper, depending on whether they are high impact, low impact, hard to get done, or easy to get done. And one final explanation. So if I'm sticking something in the top right quadrant up here, that will be high impact, so it's a good activity, good action to take, but it will be hard to get done. It will take you time, energy, trouble, money, resources, capacity, and so on. तो अब ये एक्सरसाइज जो है जिसके लिए हमारे पास अभी 40 मिनट है 3 बजे तक, वो पिछली एक्सरसाइज के आखिर में हमने आपसे और आप सब ने मिल के ये आइडेंटिफाई किया एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए और चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। अब इस एक्सरसाइज में आप अपनी अपनी टेबल पे डिस्कस कीजिए और पहले ये लाल जो आपके पास कागज़ रखे हुए हैं इस पे आप अलग अलग एक्शंस लिखें, कि जैसे एक एक्शन मेरे ग्रुप में एक एक्शन ये था कि हम लोग कैंपेन करेंगे मस्जिदों के थ्रू, तो वो बहुत सारे जो भी एक्शंस आपको समझ आते हैं एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए वो अपने अपने कार्ड्स पे लिखें। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि उन एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन लिए तो बहुत सारे एक्शंस जाते हैं लेकिन सबसे ज़रूरी कौन से हैं, और उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए आपकी टेबल्स पे ये जो बोर्ड्स लगे हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखेंगे इधर के ये एक्स एक्सिस पे लिखा है कि बहुत मुश्किल से हार्ड टू गेट डन, कि बहुत मुश्किल से होगा एक्शन, ईजी टू गेट डन, कि बहुत आसान एक्शन है हम 2 मिनट में कर लेंगे, और वाई एक्सेस पे हाई इम्पैक्ट के इस एक्शन को अगर हम कर दें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और लो इम्पैक्ट इसका मतलब कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आप हर एक्शन को फिर इस हिसाब से इस बोर्ड पे चिपकाएं कि समझें अगर आपका एक एक्शन है जो हाई इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल से भी उसको करना भी मुश्किल है, तो वो इधर लगेगा। वैसे ही अगर कोई एक्शन है जो हाई इम्पैक्ट है लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा, उसको आप इस तरफ लगा दें। वैसे इसी हिसाब से आप अलग अलग एक्शंस को अपनी अपनी शीट्स पे प्रायोरिटाइज करके चिपका दें और उसके बाद हम आगे डिस्कशन ले जाएंगे।
And two final tips. You might find it helpful to write some cards first, so get some written before you start getting them up. And then what you'll find is as you begin to put them up, you probably want to move them around because you'll find some that you put up actually probably a higher impact than others you've already placed. So get some cards written, start getting them up on the boards, then spend some time moving them around to get the relative priority right. Michael. And the facilitators are well briefed and will help you. ये बस एक एडवाइस दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने का अच्छा तरीका एक ये है कि आप सब पहले ब्रेनस्टॉर्म करके अपनी अपनी टेबल पे बहुत सारे कार्ड्स लिख लें और फिर उसके बाद एक दूसरे की मदद से प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा किधर लगाया जाएगा, और हर टेबल पे फैसिलिटेटर आपकी मदद करेंगे इस चीज़ में। चूज करेंगे और फिर वो अपने जवाबों को प्रेजेंट करेंगे। और एक और चीज, अपने मोबाइल फोन प्लीज घर के नीचे राइट से बड़ा इंटरफेयर करें। I think everybody did a very good job actually. I've chosen two groups for different reasons. Ali, who would like to report back on your DRC meeting, use of educational equipment, free education, campaign through work. Wow, campaign through the wow. इसका easy प्लेटफॉर्म है educational visits और games arrange. iPad के द्वारा जो हमारे पास आर्टिफिशियल आ जाता है, टीचर प्रेजेंस, एजुकेशन गाइडेंस और एजुकेशन एक्ट, डोर टू डोर सर्वे। इसके बाद हार्डवेयर का नाम आ गया, जो लो इम्पैक्ट आ गया, मंथली इंसेंटिव टू स्टूडेंट्स, लेसन प्लानिंग एंड प्रॉपर चेकिंग होमवर्क।
Thank you. Thank you very much, Ali. Thank you for that. You guys on the floor to talk a little bit more. We had a high impact but hard to get done group of things, which were mainly about ensuring the teachers turned up and taking action against those that didn't, and really getting on with implementing your monitoring systems as quickly as possible. So very hard to do and get right, but if you get it right, it will make a big impact. We then had a set of things that you could do relatively easily and which would have high impact. A big media campaign tying in with the national campaign in September, but also for the money you've got now, the vouchers, getting those scholarships out to the students that need them most. That's something you could do quite quickly and have high impact. We had an interesting debate about whether there were things that might be lesser impact, that were easy to do and therefore still worth doing. And I really like the announcements through loudspeakers, telling people that they've got to be in school, but also when you get back next week, meeting with your teams, telling them about the messages that come out from this training from the Chief Minister. Might not have massive impact, but it will start to push them to do more. Thank you. ये हाई इम्पैक्ट पे भी बात होगी है, हमारे इजी टास्क जो हैं उनके बारे में भी साइमन ने बता दिया है, वो पे भी मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें देखने में बाहर बहुत आसान लगती हैं लेकिन करने में बहुत मुश्किल होती हैं. जैसे कि हम लोगों को कर देते हैं कि अगर हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं नीडी स्टूडेंट्स को तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन ये चंद बच्चों के लिए है, बहुत ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट नहीं करता और उसके उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता. ताहम कुछ ना कुछ हद तक हम इससे अपनी एनरोलमेंट को रिटेन कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल में भी ला सकते हैं. और टीचर्स की अटेंडेंस इसमें मस्ट है, जिसको हम समझते हैं कि ये मुश्किल टास्क है क्योंकि मॉनिटरिंग के बावजूद, स्कूल एजुकेशन की या मॉनिटरिंग टीम के बावजूद हम इसको टास्क को पूरा नहीं कर सके. अगर हमारी ये टीचर्स वाला जो पहलू है ये पूरी तरह हम कंप्लीट कर पाएँ और टीचर्स को 100% हासिल कर पाएँ जितने हमारे पास मौजूद हैं, तो इसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों की एनरोलमेंट जो हम कर चुके होते हैं उसको कायम रखने में. क्योंकि होता यह है कि बच्चे हम एडमिट कर देते हैं और जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये जो सेंसिस है वो मेरे टीचर्स वो नहीं करना, वो सेकेंड टाइम में करें. इस तरह की एक्टिविटीज़ जो फर्स्ट टाइम में हमारे स्कूल के टीचर्स करते हैं उससे हमारी ये एनरोलमेंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर. Thank you very much, Shukriya. Caitlin, is there anyone in your group who would like to report? इस वक्त जो हमारे पास हाई इम्पैक्ट है मोटिवेशन ऑफ फील्ड स्टाफ कहने को ये इजी टू गेट है क्योंकि हम अपने फील्ड स्टाफ में लिमिटेड वीडियोज एरियोज और लर्निंग कोऑर्डिनेटर्स में आ जाते हैं और उसकी मोटिवेशन करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स की मोटिवेशन से. और टीचिंग ऑफ फील्ड स्टाफ में हाई इम्पैक्ट है, वेरी इजी टू गेट है. और मीटिंग में हार्ड है टीचर की हाई इम्पैक्ट लेकिन इजी टू गेट. जब हम इस पर बातें हैं लो इम्पैक्ट में, तो लो इम्पैक्ट में जो ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग है मैं समझती हूँ कि ये इजी टू गेट नहीं है लेकिन इसका इम्पैक्ट लो है. इसकी मतलब ये है कि हमारा टीचर न्यू चीज अडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं है. ट्रेनिंग होती है लेकिन जो मॉड्यूल्स किए जाते हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता. फिर अवार्ड और एप्रिसिएशन मैटर्स हैं, ये भी लो इम्पैक्ट है क्योंकि इसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है बहुत ज्यादा देखी जाती है. टीचर इंसेंटिव जो दिया जा रहा है उसका भी इम्पैक्ट मैं समझती हूँ लो है क्योंकि इसमें भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बहुत ज्यादा मद्देनजर